शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखाए
Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. सतगुरुवार के दिन मीठे बाप दादा हम सब के लिए On this day of Satguruvar, Baba just comes to fill our aprons with the jewels of knowledge. फिर ये भी हम सबको मीठी शिक्षा देते हैं And Baba also gives sweet teachings that जिस खजानों से भरपूर होते हो वो खजाना दूसरों को भी all the treasures which have made you complete. So you should also donate such treasures to others. To the extent you donate these treasures to others, you will be able to have that progress, or the treasures will just start growing, because these are imperishable treasures. बल्कि जितना बांटेंगे उतना वृद्धि होती जाएगी So in fact, it doesn't decrease if you just give it to others. बाबा So Baba says, the more you donate to others, the more you will be able to have those treasures. So Baba just fills our aprons with the jewels of this knowledge. बाबा के मीठे वरदान कहे महावाक्य So if you say blessings or the sweet elevated versions, let's listen to that. 29 तारीख की So today's date is 29th January. मुरली का सारे हैं The essence, के बच्चे sweet children, remember your sweet father and you will become Sato Pradhan deities. हम बोलते तो हैं बाप को याद करो We all say that remember Baba, but Baba says, what does he say? कैसा है हमारा बाप How is our sweet father? How is our father? He is very sweet. करो स्वीट बाप को So remember your sweet father. You will become Sato Pradhan deities. सारा मदार Everything depends on the pilgrimage of remembrance. यात्रा पर है मुख्य जो हमारा विषय कहें या धारणा The most important subject or the dharana is याद की it's the pilgrimage of remembrance. Question: जैसे बाप just as you children experience the father's pull, in the same way from which children will everyone experience a pull. बच्चों को होती है वैसे किन बच्चों की कशिश सबको होगी जो प्रभु प्रिय हैं Those who are loved by the father, प्रिय कैसे बन जाते हैं they just become loved by everyone. How do they become that? Baba says that which children have that kind of जो फूल बने हैं pull which attracts other Baba's children towards them, साकार में कई बार अपने हाथ में because as you all are aware that Sakar Baba always used to मुरली सुनाते थे he used to always keep that flower and then just say the Murli. ये है साथ Of course, we are the living flowers. में सब बाबा के बच्चे भी All Baba's children बन करके बैठे हैं have become those flowers and they are sitting here. So let's listen to the answer. From those who have become flowers, just as little children are flowers and they are unaware of vices. निर्दोष हैं The flowers, what do you mean by this term flowers? They are very neutral and they are very clean, pure, and they are viceless. पता भी नहीं So just as little children are flowers and they are unaware of the vices, so everyone is attracted to them. Baba says, so such children are very innocent. In the same way, when you children become flowers, that is, when you become pure, everyone will be attracted. तो सबको कशिश होगी जैसे
छोटे बच्चे just like small children, that is little children, just they have that kind of हैं क्यों? radiance which just pulls everyone's attention because they don't have the bad odor of voices. They have that fragrance of purity which attracts everyone. The fragrance comes from purity. विकारों का There should be no thorns of vice in you. ओम शांति। Om Shanti. रूहानी बच्चे जानते So, you spiritual children know that this is the most auspicious confluence age. हैं कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है, सिर्फ संगम युग नहीं है। It's not just the confluence age. We know that this is the confluence द्वापर के बीच में संगम है। between the golden, ये कौन सा है? between the silver and the copper, and also the golden and the iron age. Baba says this is the most auspicious because this comes between the golden and the iron age. Can you see your most elevated faces of the future? अपना भविष्य का जो पुरुषोत्तम मुख है, The most elevated face of the future, sometimes we see, we heard, we usually hear in the song that वो कहते हैं अपना just look देखते हो भविष्य का, look your face in the mirror of the knowledge. चोला देखते हो, Can you see your most elevated costumes? सिर्फ मुख कैसे देखेंगे? How can you see the elevate? How can you see only the face? Baba says the entire the deity form. फील करते हो Can you feel that you will once again go to that golden aged new world of Lakshmi and Narayan's dynasty, that is to the land of happiness, की वंशावली में जाएंगे and that you will become the most elevated beings. अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। देखो बाबा पुरुषोत्तम शब्द की कितनी गहराई बता दी। Baba just explains the depth of this term that is elevated. What's the significance of that term? ये While sitting here, do you have these thoughts? स्टूडेंट जो पढ़ते When students are studying, their intellects are aware of in which class they are studying. I will become a barrister and I will become so and so. दर्जे में है, क्या पद प्राप्त करना है, कौन सी डिग्री लेनी What degrees they have to attain, because the student will have the clear picture of their degrees and the future. बैरिस्टर I will become a barrister or I will become so and so. In the same way, when you sit here, you are aware that you will go into the क्या जानते Vishnu's dynasty. वहाँ की पढ़ाई का What's the difference between this world's, that is, ये जानते हो this study and the worldly study? टी में जाएंगे। विष्णु के दो रूप हैं, The two forms of Vishnu are Lakshmi and Narayan, a god and goddess. दो रूप है, कंबाइंड चतुर्भुज वो तो है ही है, पर मुख्य आज बाबा बता रहे But Baba says there are two forms. लक्ष्मी Your intellects are now alaukik. हाँ। तुम्हारी बुद्धि अभी अलौकिक है। छोटी छोटी बातें बाबा देखो कितना These are very sensitive things. Baba says, now what's in my intellect? It's not an ordinary or laukik. अलौकिक It's alaukik. मनुष्य की बुद्धि में So these things wouldn't be turning around in the intellect of anyone else. All of these things are in the intellects of you children. ये कोई कॉमन This is not a common satsang. यहाँ You are sitting here with the understanding that you are sitting in the company of true Baba, who is called Shiv. शिव कहा जाता है, उसके संग में बैठे हैं। तो बैठने समय भी देखो Even while sitting, अनुभूति what's the experience? What should it is just not like ordinary. This is not an ordinary gathering. कौन सा सत्संग, ये कॉमन सत्संग नहीं है। Baba says this is not a common satsang. You are sitting here with the understanding that you are sitting in the company of true Baba, who is called Shiv. शिव बाबा Shiv Baba alone is the creator. He alone knows the beginning, middle, and the end of creation. जानते हैं
ये He gives us knowledge the देते knowledge. हैं जैसे कि कल की It's बात as though he's telling us a matter of yesterday. वो बाबा कहते कोई नई बात Baba नहीं says this is nothing है। new. अरे कल तुम बच्चे क्या थे, कहाँ Yesterday, where were कैसे you? थे? How were you? कल तुम ये थे, आज And you तुम were this फिर वही yesterday, बन रहे and हो। today you are again making effort to become कॉमन like नहीं that. है, उसके संग में बैठे हो, वो रचयिता है, आदि मध्य अंत को जानते हैं, So he's knowledge the देते creator. He हैं। also knows the जैसे beginning, कि middle, and end कल of the की बात creation, सुना, and he gives us the knowledge of the यहाँ same. बैठे हो It's तो as ये though he याद तो just होगा ना tells us the matter of कि हम yesterday. While आए sitting हैं, here, you must remember that you have come here to be हम rejuvenated. यहाँ Why बैठे have you हैं, come here? आए हैं, किस लिए? मुख्य हमारी बात क्या है? What's the most जो कोई prominent नहीं one? कर सकता, That nothing, no one can even do. परिवर्तन करना, That is the rejuvenate transformation, करना, that is rejuvenation, वो एक बाबा का ही that is काम the है। task of one Baba. क्यों? वो स्वयं ही ऐसे परफेक्ट है Because Baba जो himself is हमको just perfect, ट्रांसफर so कर that he सकते can हैं और transform कर भी us, रहे and he हैं। is also doing. यहाँ बैठे हो तो याद तो होगा ना हम So आए हैं when you, while रिजुवेट sitting होने। here, you must remember that you have come अर्थात here to be rejuvenated. That देखो is, उसका भी बाबा गहरा अर्थ that also बताते Baba हैं। just gives the शरीर बदल deep देवता aspects of शरीर this ले, term rejuvenation, which means you are going to इस change your बात की bodies into the deity ट्रांसफर होने bodies. या बदली करने Why वाले have you come here? यहाँ हम यहाँ बैठे यहाँ आए हैं। Why are you sitting here, and why are we still coming? ये शरीर जो है वो बदल देवता Baba शरीर says ले we लिया। have to change this आत्मा body कहती in है and take the deity हमारा ये costume. तमो The soul प्रधान says this पुराना is my शरीर tamo है, pradhan old body which I इसे have to बदल change कर ऐसा and become like ऐसा Lakshmi and बना Narayan. जो पहले बताया लक्ष्मी नारायण बनने का है। Your aim and objective is so elevated. बहुत क्लियर है बाबा। Baba says it's पढ़ाने clear. वाला The टीचर teacher who is teaching you would be definitely cleverer than the students who are studying. होशियार होगा ना। हम सबको पढ़ाने वाला Baba, who is teaching all of us, that is Shiv Baba or Bap Dada or Brahma Baba, होशियार है, they must be much more cleverer than us, क्लियर करके सब पढ़ाते so हैं, that both of समझाते them हैं। make it very clear and they are teaching us. क्या पढ़ाते हैं? What अच्छे are they कर्म teaching us? सिखलाते He is educating us and teaching us perform good actions. What are we studying? हैं। तो जरूर उन To perform good actions, so he must surely be elevated. हो हमको You know that God, the highest on high, is teaching us. भगवान पढ़ाते हैं। In the सारे future, ऊंच से ऊंच जो है वो स्वयं हमें पढ़ाते so the one who is the highest on high हैं। हम भविष्य में 100 देवता from all the three worlds, if you take also so that God is teaching us, in the future we will become deities like them. और कोई को ऐसे नई दुनिया का क्या बाबा कहते हैं, और कोई Baba को ऐसे says नई दुनिया का the things we are studying are for the future new world. No one else even knows about that new world. It now enters your intellects that नई दुनिया के लक्ष्मी नारायण मलिक थे, तो जरूर फिर रिपीट होगा ना। ड्रामा रिपीट हो रहा है, drama just continues. नारायण थे वही फिर बने। So the souls who played the roles of Lakshmi and Narayan, they will again play the roles. It must definitely repeat. And the Father explains, I teach you and change you from human beings into deities. It will definitely be number-wise among the deities too. राजधानी स्थापन होती है, Kingdom is being established. Of course, it's a number-wise. सारा दिन Throughout the day, you must have the thought that I am a soul, I a soul. माँ बाबा के तो सारा दिन ये ख्यालात चलते, Brahma Baba's thoughts तो बाबा कहते are तुम्हारा भी this. जरूर चलता होगा। So, of course, you must also have such thoughts. हम आत्मा हैं, I am a soul, हमारी I, आत्मा a जो soul who was बहुत very impure, I am now remembering the pure Father in order to become pure. याद करती है। बाबा की याद Baba's remembrance, बनाती है कि why does it make us pure? अपन
because Baba is the ever pure याद करने being. से So when we remember the most pure being, we become we become pure. याद का अर्थ भी समझना You also पड़ेगा। have to understand the आत्मा meaning याद of करती है remembrance. स्वीट The soul बाप को। remembers his sweet आप खुद father. कहते हैं The मुझे father याद himself करने says, से तुम children, सतो by प्रधान remembering me, you will देवता become बन Sato जाओगे। Pradhan सारा deities. मदार Everything याद की depends on the यात्रा पर pilgrimage of है। remembrance. बाप तो जरूर The पूछेंगे father ना, would definitely ask children, for पूछेंगे how long do you कितना remember समय me? याद करते हो। गिनती करने वाली बात है। This is गिनती the करने point to की be चीज़ है considered. क्या याद करना। Do you जो think अपना होता है it's वो तो something has to be counted? सदा निरंतर So याद if something really रहता belongs ही to me, रहता है। that is फिर भी देखो remembered बाबा हमको naturally. पूछते हैं Despite that, Baba still क्यों asks us, पूछते children, हैं how याद long में। do you remember me? ये पूछने का कारण ये What's the लड़ाई reason है, for Baba युद्ध का asking us? Because this is the मैदान है ना। battlefield. याद की यात्रा एक युद्ध है। तो बाप It तो is जरूर in पूछेंगे remembrance ना। that there is a battle with Maya. याद करने में ही माया की लड़ाई होती है। You yourselves can also समझते हो understand when it's not a ये pilgrimage यात्रा but more नहीं, like a battle. परंतु There are जैसे many ही obstacles in this. लड़ाई है इसमें विघ्न बहुत पड़ते हैं। किसमें बाबा को याद करने विघ्न बहुत पड़ते हैं। याद की यात्रा में रहने में ही Maya creates obstacles for you on the pilgrimage of remembrance. That is, she makes you जो forget. बाप को भुला देती है, बाबा की याद ही भुला देती है। कहते हैं बाबा You say, Baba, we have many storms of Maya when we remember you. माया के तूफान बहुत लगते हैं। नंबर वन The number one storm is body consciousness, that is lust. नंबर वन पहले शुरुआत वहाँ से होती है। The storm starts with this voice, then anger, greed, attachment, and ego. आज काम का तूफान, कल क्रोध का Baba says, today I am affected by the storm of lust, then anger, then greed, attachment, ego. बहुत अच्छी रही, कोई भी तूफान नहीं आया। So children say that देखो we aren't affected by any of the storms. Just see Baba while सुनते समय सुनाते समय speaking the Murli, Baba just lets the children check their stage. कौन सा तूफान आ जाए, कौन सा नहीं Which storm has come today and यात्रा में was I affected or not? So children say, Baba, we try a lot not to have obstacles, but when we stay in remembrance, but in spite of that there are storms. Today it's the storm of anger, it's the storm of greed. में प्रेम के Today my stage was good. I didn't have any storms. I stayed on the pilgrimage of remembrance the whole day and I had a lot of happiness. I remember Baba a great deal and tears of love just continue to flow in remembrance. By staying in the remembrance of the Father, you will become sweet. बीच में अटेंशन दिलवाते हैं कि हम माया से हार So you children understand where have you reached by being defeated by Maya. हैं। बच्चे हिसाब नहीं Some children calculate how many months and days there are in a कितने cycle. मास कितने दिन हैं। देखो बाबा कितना गहराई से चिंतन Baba just करना सिखाते हैं। teaches us to check बुद्धि in a subtle way. It enters your intellects that if someone says the duration of each cycle is hundreds of thousands of years, no one could even calculate anything. 5000 वर्ष में के हिसाब में भी देखो भूल जाते हैं, भूलते रहते हैं। Even we just forget when the duration itself is 5,000 years. If it is hundreds of thousands of years, just think about the condition. होता ही रहता है। The Father says the world cycle just continues to turn. You know how many births you take in the world cycle and how do you go into the dynasty. डायनेस्टी में जाते हैं, ये तो जानते हो ना। These are completely new things. This is the new knowledge for the new world. How many births are taken in each age, and बिल्कुल नई नई बातें हैं। these are completely new things. This is the new knowledge for the new world, and heaven is called the new world. कहा जाता है, लोग समझते हैं आज की दुनिया बड़ी नई बन गई। साइंस से बहुत कुछ अपना जलवा दिखाता है ना। The science just shows its splendor, and the people of the world just believe that this is heaven. पता नहीं है कि But they are unaware that what's that actual new world? What are, नई बातें
and what are the things associated with that नॉलेज new है, world. नई बातें हैं नई दुनिया के लिए। नई दुनिया स्वर्ग को कहते हैं। तुम कहेंगे हम अभी मनुष्य हैं, You say देवता that we बन are गए human हैं। beings and we are becoming देवता deities. The पद है deity status ऊंच। is the most elevated तुम one. जानते हो You हम children know that you are सबसे receiving this बुनियादी unique knowledge. नॉलेज ले रहे हैं। हमको The पढ़ाने one who is वाला teaching us is खुद unique हरा without an image. चित्र है, He doesn't have a corporeal साकार image. चित्र नहीं है, He is वो constantly है incorporeal. निराकार। तो Just ड्रामा see में how देखो he has कैसा such a good अच्छा part in the पाठ drama. रखा हुआ है। बाप पढ़ाए How कैसे? does the Father teach us? आप He तो himself tells you because he is और शरीर incorporeal है। and we बाबा are कैसे पढ़ाए? corporeal तो beings. देखो बाबा कहते हैं ना कैसे अच्छा देखो ये ड्रामा में तन मुकर्रर करके पढ़ाने So का Baba एक says पाठ है। a costume is fixed in the drama for Baba to just take that costume and teach us. खुद बतलाते हैं, He himself tells you, I खुद enter such and बतलाते such a हैं मैं body. फलाने तन में आता हूँ। He also tells you which body he enters. ब्रह्मा तन में आते हैं। Shiv Baba comes in Brahma Baba's बिना तन body. में आए तो नहीं बता सकते हैं, Without पर taking the जब ब्रह्मा corporeal तन में support आते or the हैं तो costume, आने से Baba पहले cannot tell क्या anything. बताते हैं? So before मैं coming, what does he फलाने तन tell? में आता हूँ। Baba tells, I किस enter तन में such and आता such a हूँ body. वो भी बताते हैं। मनुष्य तो बहुत मूंझते हैं। People become क्या confused. एक ही Does he तन में always आए? come in the same body? 24 अवतार, However, 19 this is the अवतार, drama because the people of the world show that there are 24 incarnation. भगवान सर्वव्यापी है, God is सभी उनके omnipresent. रूप है। These वो are the क्या क्या different समझते forms of हैं? him. सोचते So एक what ही do तन they में think? आता है। परंतु ये तो ड्रामा है, However, this is the drama. चेंज नहीं There हो can't be any सकती है। change in that. Only you listen यह to these बातें things and तुम imbibe them सुनते and हो, relate them to others in the way that खाली Shiv Baba सुनते हो, teaches you. धारण भी करते हो। Do we just listen धारण or do we करते imbibe हो also? तो सुनाते भी हो। When we कैसे imbibe, we हमको actually शिव teach बाबा others. पढ़ाते हैं, And then we will हम relate it भी to others और how Shiv आत्माओं Baba को is teaching पढ़ाते us. Then we teach other हैं। souls. बाबा कहते हैं ना, पहले ही बताया ना, सिर्फ पढ़ना नहीं है, Baba said you shouldn't only धारण study, करना you माना must imbibe. पढ़ाना भी है। Then you will तो enable पता others चलेगा study. कितना धारण किया है। Have पढ़ती we तो studied? आत्मा है, Because it is souls who आत्मा ही study. सीखती है, It is souls who आत्मा study and ही teach सिखलाती others. है। Souls are the most valuable. मोस्ट वैल्यूएबल कौन है? आत्मा। आत्मा The souls are अविनाशी है, imperishable and अमर immortal. है, It is just सिर्फ the bodies शरीर that are खत्म होता destroyed. है। हम आत्माएं अपने We परम souls are पिता receiving this परमात्मा knowledge से from our Supreme Father, the नॉलेज Supreme ले Soul, रही है। and we are रचयिता receiving this रचना के knowledge of the आदि Creator मध्य and the अंत beginning, middle, and end of the 84 जन्मों creation की and of 84 नॉलेज ले births. रहे हैं। नॉलेज कौन लेती Who है? is receiving this knowledge? आत्मा। Souls are देखो receiving बाबा it. Baba just आत्मिक स्थिति में रहने, wants आत्मा us दीवाने बन के to सुनना be in बोलना that soul conscious क्या stage करना, कैसे while करना, listening to वो the Murli, while प्रैक्टिस कराते communicating. हैं। That Baba wants. हम Baba आत्मा enables हैं। us to practice. हाँ, 84 जन्मों की नॉलेज ले रहे हैं। नॉलेज कौन लेती है? The आत्मा। souls are आत्मा receiving it. अविनाशी Souls है। are imperishable. अगर Attachment मोह should रखना है, only बाबा be कहते to हैं, the मोह रखना imperishable चाहिए things, किसमें? not to the perishable अविनाशी things. चीज में, न कि विनाशी चीज में। इतना समय तुम विनाशी You have शरीर had में ही मोह attachment to रखते the आए हो। perishable bodies for so long. अभी समझते हो You now हम understand that each of you is a soul and you शरीर have to का renounce भान the छोड़ना consciousness है। of the body. कोई कोई बच्चे Some children दिखते हैं, write, कोई कोई I. है ना, वो So there साकार are में भी some बाबा को children बहुत लिखते because थे, they बहुत used to write टिच even करते थे, to मैं आत्मा Sakar हूँ, मैं Baba आत्मा that हूँ, I am a आत्मा soul. देख रहा हूँ, आत्मा I am सुन looking रहा at हूँ। the soul, I तो वो the बाबा soul, को I'm लिखते हैं, listening बाबा through my मुझ ears. आत्मा ने ये So काम some किया children write, Baba, है ना। I, देह this या soul, देह पे did नहीं, this पर work. आत्मा ने काम किया। The soul उसको has done the प्रैक्टिस खुद work. भी करते हैं So, और बोलते भी there are भाषा some ऐसी children है। who themselves मुझ do this आत्मा ने practice. आज ये I, भाषण this किया, soul, gave the मुझ talk आत्मा today. ने I, आज this soul, बहुत remembered Baba a बहुत lot बाबा today. को याद किया। And that one is वो the है Supreme Soul, सुप्रीम knowledgeful. आत्मा, नॉलेजफुल। वो सुप्रीम क्यों है? Why is he नॉलेजफुल है। supreme? Because he's तुम knowledgeful. बच्चों को कितनी He is नॉलेज giving you, देते हैं। children, so much of मूल this वतन, knowledge. सूक्ष्म वतन को भी तुम जानते You हो। know the incorporeal world and the कितनी बड़ी subtle देखो region, गहरी बाबा के पास नॉलेज है। how much Baba has मनुष्यों की बुद्धि में तो knowledge. कुछ भी नहीं है। People's तुम्हारी intellects बुद्धि have में no है awareness कि of रचयिता anything.
Your intellects are aware of who the creator is. The creator of this human world is remembered, and he must definitely come here to act. कर्तव्य में आते हैं. सिर्फ यूं ही You क्रिएटर know नाम that मात्र नहीं है. he is not just the creator for namesake, but he definitely प्रैक्टिकल comes. बाबा वो He कर्तव्य में आते practically हैं. just Baba comes जानते हो and और कोई carries मनुष्य नहीं on his task. जिसको You know आत्मा that और no other human परमात्मा beings बाप remember याद souls or हो. the supreme soul. यहाँ देखो बाबा आज सिखा रहे आत्मा भी याद हो साथ साथ परमात्मा. Baba says we should know about our own original form and about बाप Baba. नॉलेज देते हैं अपने The को Father आत्मा alone gives you समझो. this तुम knowledge. अपन Consider को yourself to be शरीर souls. समझ By considering क्या yourselves to उल्टे be लटक bodies, पड़े you have हो, been जिसको dangling बाबा upside कई down. बार उल्लू कहते हैं. उल्टे लटकना. आत्मा सच्चित Each soul is आनंद the truth, स्वरूप है. living being, and an आत्मा embodiment के of bliss. सबसे The ज़्यादा maximum praise महिमा is of है. souls. एक बाप There की is so आत्मा much की praise कितनी of the बड़ी soul of महिमा है. one Father. कोई He alone परमात्मा is the remover of सुख sorrow करता and the है. bestower of happiness. मच्छर आदि की The महिमा mosquitoes करेंगे wouldn't बाबा be कहते हैं. praised as मच्छर आदि being की महिमा नहीं करेंगे. remover of सुख sorrow or दुख the bestower हरता of सुख happiness करता or है. मच्छर oceans तो of क्या knowledge. करता है? What do दुख the देने mosquitoes वाला do? है. They are ये the ones कहेंगे who वो bite दुख and they करता है give सुख sorrow. करता है. So do you give ज्ञान this का title to सागर भी mosquitoes? बाप है. ऐसे No, लग this is करके the भी नहीं Father's कहेंगे कि वो praise. ज्ञान का सागर है. नहीं, ये सब बाप की महिमा है. Each one तुम of भी you is also the हर remover एक of sorrow and the bestower of खुद happiness because दुख you are the हरता children of that सुख Father करता हो, who क्योंकि removes बाप के everyone's बच्चे sorrow हो. and gives them happiness. जो सबको Aren't you? दुख हर कर सुख देते हो, सो भी आधा That too is for half a cycle. को सुख तो देते हैं. Baba says, of कितने course. समय तक का. And what's the duration of that happiness? Baba tells that happiness is for half a cycle. How much attention should be paid on that? No one has this knowledge, and only the one Father is knowledgeful. We didn't have any of this knowledge. If we didn't even know the one Father, did we have this knowledge before? एक बाप को भी नहीं जानते. If we didn't even know the one Father, what other knowledge would we have had? मूल को ही नहीं जानते. When we didn't बीज को ही नहीं understand the जानते. seed itself, तो और क्या नॉलेज होगी. what do we तुम know फील then? करते हो. You know, हम feel that पहले you are the ones who make नॉलेज this knowledge. लेते थे. Previously, you didn't know कुछ anything. भी नहीं थे. उस समय शुरुआत होती है तो क्या बाबा At the beginning of the creation of the sacrificial fire, we didn't know that much. A baby doesn't have any knowledge or any defects. Therefore, we were also just like small babies. We didn't have many defects. Therefore, because it's pure, a baby is said to be a great soul. बहुत निर्दोष. विकारों का ज्ञान तक भी नहीं है. They are beyond the ignorant, they are beyond the knowledge of these voices. जितना छोटा बच्चा The younger the child, the more it would be a number one flower. बिल्कुल ही It would जैसे be almost as though he is in his karmatit stage. बताते हैं कर्म Baba just describes the छोटे बच्चे stage of karmatit, just like the little children. कर्म विकर्म को He doesn't know anything about the actions or sinful actions. The baby just knows itself. वो फूल है He's इसलिए a flower, that's why he attracts everyone. करते हैं. जैसे अब बाबा कशिश करते हैं. बाप आए हैं किस लिए. Of you. Why has he come? He has come to make all of you into flowers. करने के लिए. You also have some bad thorns in you. बहुत खराब देखो कांटे भी हैं. There are the thorns of five vices. सबसे खराब. At this time, you have the knowledge of flowers and thorns, and there is also a forest of thorns. ऐसा कौन समझ सकता. Who can understand this language that is the thorns and flowers? Only Baba's children understand. No one understands this God's language. कांटों का भी जंगल होता है. बबुल का The thorns of a bubble bush are very big. बाबा कई बार मई का मिसाल देते हैं ना. वहाँ Baba just gives the example. ब्रह्मा बाबा वहाँ बहुत जाते थे. Brahma Baba used to visit that temple. तो बबुल माना कांटा. Many things are made from those thorns, and Baba just changes the thorns into flowers. चीजें बनती है. भेंट की जाती है. Thorns are compared to human beings, and that's why the Father explains कहते हैं बाप
At this time, there are many human thorns who cause a lot of sorrow, and this is why the world is called the world of sorrow. And they even say, Father is the bestower of happiness, Maya, Ravan is the bestower of sorrow. देखो बाबा कितनी अच्छी अच्छी बता रहे हैं। How good things Baba tells. Then in the golden age, Maya will not exist. So these things will not even exist there either. In a drama, the same part is not played twice. It's in your intellects that every part being played is new. पाठ बजता है Just think about it from the golden age until now, the days change, the whole activity changes. विचार करो सतयुग से लेकर यहाँ तक के दिन ही बदल जाते हैं। एक एक दिन बाबा देखो Baba says each and every day, every moment changes. एक्टिविटी भी The record of the complete activity of 5,000 years is recorded in new souls, and this cannot change. एक्टिविटी का रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ है, वो बदल नहीं सकता है। अविनाशी आत्मा में पाठ Perishable soul has got such a record, so that will not change. हर आत्मा के Each soul has his own part recorded in him. No one can even understand this single thing. You now know the beginning, middle, and the end. हो ये स्कूल This is the school, isn't it? बाबा बीच बीच में याद दिला Baba just reminds us that this is a school and you are sitting in the school. कभी इधर उधर देखना जुट के आना, तो स्कूल में ऐसे थोड़ी Do you think students just pay attention to the surroundings, look here and there? Students do like this in a school. पवित्र बनने की ये पढ़ाई You have to know the beginning, middle, and end of the world. This is also a study to remember the Father to become pure. Prior to this, did you know that you had to become like that? क्लियर कर The Father explains everything so clearly. You were in that first number, and you gradually came down, and you have become like this. उतरते अब क्या बन गए हो? दुनिया को तो Look देखो what the world has become. क्या बन गई है? कितने There are so many ढेर human मनुष्य beings. हैं। इन लक्ष्मी Just think नारायण about की राजधानी का what the विचार kingdom तो of करो। Lakshmi and Narayan will be like. The क्या palaces होगा? where they बाबा live will be देखो, studded. उनको कहते हैं, Baba सोचो just क्या था वो says, दुनिया think में about कैसी that थी, world, that क्या होगा? what would be there. ये जहाँ रहते The होंगे palaces where they live will be studded with the jewels हीरे and diamonds. जवाहरातों के महल It होंगे। enters your intellects that you are now becoming the residents of heaven. हम अभी स्वर्गवासी There होंगे। you will build your own वैसे ही palaces. बहुत साधारण कह देते हैं, मनुष्य मरा स्वर्ग Because पधारा, people just स्वर्ग say में it in गया। a very common manner that बाबा someone देखो sheds a स्वर्ग body, a कैसे soul याद sheds a करना, body. They say that कैसे he has वहाँ gone to कुछ become a resident चढ़ाना, of heaven. He has already become the resident of दिखाते heaven. हैं। But Baba says you विचार have to करो वो think कैसे रहते होंगे, क्या what होगा, actually happens, how is that बुद्धि में world. आता है। So it does it वहाँ enter अपने your intellect? मकान आदि बनाएंगे। It ऐसे isn't it नहीं that कि the नीचे golden से city बिल्डिंग of Sri बनाए Krishna will द्वारका निकल emerge आएगी। from down below as ऐसे they have शास्त्रों में portrayed in the लिखा है। scriptures? शास्त्र नाम The ही word चला scriptures आता has है, continued and they और तो can't कोई call नाम them रख भी नहीं anything सकते, else. शास्त्र ही कहते हैं। Other books are used for studying. और किताब होते हैं पढ़ाई के। Another धार्मिक type जो of book is a novel. लिखी हुई है वो शास्त्र है, और जो दूसरी Anything which बातें is हैं वो mentioned relevant to the religion पढ़ाई है, is किताब called है। scripture or religious book. And दूसरे another type नॉवेल्स of book भी is होते novel. हैं, Other books कई are just नॉवेल्स भी for पढ़ने के studying होते from. हैं। अब तीनों का अलग अलग अर्थ बता रहे Baba हैं। just explains the इनको different types पुस्तक of अथवा books and what शास्त्र are कहते हैं। covered in those books. वो है Those who study पढ़ाई the के scriptures are किताब। called शास्त्र devotees. पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? भक्त कहा जाता है। There are two भक्ति और things, ज्ञान दो चीजें हैं, devotion and knowledge. और तीसरा है What's क्या? their वैराग। disinterest in? कहते हैं ना ज्ञान भक्ति और वैराग। It's said that तो भक्ति और ज्ञान knowledge, दो चीजें हैं, और devotion तीसरा and वैराग disinterest. किसका? The third is disinterest of what? भक्ति का या ज्ञान का? Of devotion or बाबा of देखो हम knowledge? लोगों को कैसे क्वेश्चन आंसर How पूछ Baba के just पढ़ाते हैं। clarifies in the form of question. जरूर कहेंगे भक्ति का, तुमको ज्ञान Surely मिल the रहा है, disinterest इससे of the तुम devotion. इतना ऊंच बनते हो। You are now receiving this knowledge through which you become very elevated. The Father is making you into the bestowers of happiness. The land of happiness is called heaven, and you are now going to the land of happiness, so He teaches you. It's you souls who take this knowledge. सबके भाग्य में पढ़ने का भी नहीं है। देखो बाबा बताते हैं, पढ़ के Baba भी says, who will at least study? It's not in the fortune of everyone to study. धाम में चलने वाले
Those who like to go to the land of happiness, only such ये ज्ञान भी souls are तुम्हारी taught. आत्मा ही लेती It है, is you souls who take this knowledge. कोई धर्म नहीं है, The souls don't have a religion. They are just souls, the point of light. धर्म नहीं है। They don't have any religion. वो फिर आत्मा जब Souls, शरीर में आती है a तो soul is a शरीर soul. It is when the soul enters this body, the religion of the body is different. What's the religion of souls? आत्मा तो A soul is just a point and it's an embodiment of peace. बिंदु मिशन है, शांत स्वरूप है, Souls reside in the land of peace, the land of liberation. में रहती है। तो बाप The father now explains all children have a right. समझाते हैं, What does he सब explain? बच्चों का हक है, छोटे हो बड़े हो कोई धर्म का हो, There are many children who, irrespective of whatever religion you belong to, or irrespective of the caste, creed बहुत बच्चे you are from, Baba says every child has a right, whether he is निकल कर अपने असली धर्म में आ जाएंगे। is of whatever देवी देवता bodily labels he has. गए हैं, There are many children who have been converted to other religions. They will still emerge and come back to their original religion. वो बाबा कितना अच्छा क्लियर बता, How clearly Baba tells, we do the service, we make the effort. कोई रिजल्ट नहीं निकलती, When we don't get the result, Baba says, तो अपने आप those who belong to the deity religion, they will just come at the accurate time. तो कोई समझ नहीं सकेंगे। No one can understand these things. हमेशा क्या करना है, बाप What do we have to understand? परिचय देना, We must first give the Father's introduction. मूंज पड़े, It is in this everyone becomes confused. Whether God is one, He is omnipresent, or how is He? तुम बच्चे जानते हो अभी You children now know who is teaching you. The Father is teaching you. ऑर्डिनरी कोई नहीं है, It बाप is not someone who is ordinary who is teaching you. Sri Krishna is a bodily being. देखो ब्रह्मा This Brahma is called Dada. दादा कहेंगे, All are brothers. भाई भाई है, Then it depends on the status. है मर्तबे के ऊपर, This is the body of just the souls are brothers. आधार पर Based on the study, each one has got a status. This is the body of a brother and this is the body of a sister. You now know this. आत्मा तो एक A soul is just a tiny star. क्या है, सितारा है, All of this knowledge in this is a tiny star. छोटे से सितारे में है, A star can't speak without a body. बात भी नहीं कर सकते। A star needs organs with which to play a part. परमात्मा का कितना Baba just takes us to the subtle पाठ बजाने knowledge or the clarity about the soul and the supreme soul from in various ways. यहाँ आकर आत्मा शरीर So the world of stars is separate, then the soul comes here and adopts a body, that is the home of souls. A soul is a tiny point, whereas the body is a big thing. Therefore, the people remember the body so much. You now have to remember the one Supreme Father, Supreme Soul. चीज थोड़ा कम याद रहती है, बड़ी The one which is subtle gets slipped away, and the something which is visible in a gross way, that's remembered. तुमको याद करना है एक परम पिता, You have to remember the one Supreme Soul, Supreme Father. He is the truth. Since the gathering of souls and Supreme Soul takes place, संगम पर देखो होता है, that happens at the Confluence stage, it's also remembered that souls remain separated from the Supreme Soul for a long time. We became separated from Baba. वो आत्मा नहीं, आत्मा है। Souls were separated from Supreme Soul. इससे पहले हम बोलते थे ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे वो काल, आज बाबा देखो We used to say that soul remains separated. Baba says it is souls, not a soul. There are souls who remain separated from Supreme Soul for a long time. We became separated from Baba. Do you remember for how long you have been separated? बाप The Father comes and tells you that what has He been telling you every cycle? There can't be the slightest change in that. करे फर्क नहीं पड़ सकता है, Every act that takes place second by second is new. It's as though you leave behind every second that passes and every minute that passes. It just repeats identically, but still every scene that happens is new. पास होता है, फिर मिनट पास होता है, उसको जैसे छोड़ते जाते हैं, पास होता They continue to pass so that you can then say you have passed through this many years, days, minutes and seconds. पास करके आए, There will be the full 5,000 years and it will then start from number 1. फिर एक
there is this accurate account. एक्यूरेट देखो हिसाब है, मिनट Every minute, second are noted. अभी तुमसे If someone were to ask you how many births someone has taken, how could you calculate and give the answer? कोई के भी दिए, चाहे ब्रह्मा हो, कोई के भी दिए, भाई इसने Whether कितने about बरस Brahma जन्म Baba लिया, or तुम गिनती करके बता सकते हो ना। anyone. श्री Sri कृष्ण Krishna took the number one नंबर birth. में जन्म लिया है। शिव You का can't तो calculate मिनट every सेकंड minute and कुछ second भी for नहीं Sri निकाल Krishna. सकते हो। The time, देहधारियों the का निकाल date, सकते and हो, moment. जिसको शरीर ही नहीं है उसका The क्या one who is निकालेंगे। bodiless, श्री how कृष्ण can की you take तिथि his तारीख सब पूरा the लिखा time हुआ है। of his birth, मनुष्यों the की date, घड़ी time, में moment of भी Sri Krishna has been mentioned. मिनट का There सेकंड can का be the फर्क difference पड़ of a minute or सकता है। second in the clock of human शिव beings, बाबा के but there can't be the अवतरण में slightest ये change in the बिल्कुल moment that फर्क Shiv नहीं Baba पड़ सकता। incarnates. देखा, सुन रहे हैं ना बाबा Did you की listen कृपा how कैसे accurate। accurate Baba's time? शिव बाबा के अवतरण में फर्क नहीं पड़ सकता, पता There भी नहीं can't even पड़ता be the है कब। slightest change in the moment that Shiv Baba incarnates. ऐसे भी You नहीं can't कोई even tell when he साक्षात्कार came. हुआ It तब isn't आया। that when वो he ब्रह्मा came when बाबा Brahma कहते Baba हैं, had visions. No, अनुभव से सुनाते हैं। Baba just उसको gives थोड़ी his बाबा के practical टाइम में क्या, मुझे sharings. ये थोड़ी पता चला कि Baba ये didn't विषय even know बाबा that Baba would अनायास कभी भी become the costume for Shiv Baba. याद करो करो आ जाता है। Baba always used to हम come दान से कह देते हैं, whenever he ऐसे wants नहीं to उस take the समय कोई costume. प्रवेश हुआ है, One can only estimate. साक्षात्कार It हुआ isn't that he entered at the कि time when हम Shiv ये Baba saw in a vision that he was बनेंगे। to become so and so. बाबा अभी मुरली आज पूरी हो रही है। मीठे मीठे Okay, Acha, to you sweetest, beloved, long lost and now found children, love, remembrance and good morning from the mother, father and Bap Dada. The spiritual father says namaste to you spiritual children. रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलिए। So we spiritual children also offer love, remembrance and say good morning, namaste to the mother, father and Bap Dada. धारणा के लिए मुख्य सार The essence for Dharana, the first point, in order to go to that land of happiness, become a bestower of happiness. सुखधाम में जाना है, सुखधाम में चलना है। If you would like to wish to the land of happiness, then you must become a bestower of happiness. We are creating that world. सुखधाम में चलने के लिए सुखदाई बनना है। सब Remove everyone's sorrow and give them happiness. Never become a thorn that causes sorrow. कांटा नहीं बनना है। देखो कितनी गहरी बातें बाबा These are the deep matters. सुखधाम में जाना है, सुखधाम It's if you want to go to that world, you are creating that world. So if you would like to go there, what should you become? You must become a bestower of happiness. इस विनाशी शरीर Sec- में आत्मा The soul is in this perishable body. The soul is the most valuable. It is the immortal and imperishable. So have love for the imperishable things and finish the consciousness of the body. विनाशी चीज से हम प्यार तो रखते हैं, लेकिन हमको जब विनाश हो जाता है तो क्या हालत होती है। If we have love for the perishable things, what would be our stage when that gets destroyed? प्यार रखना है, देह का भान मिटा देना है। वरदान, Blessing, अपने may you die alive and become free from bondage and enable others to become free from bondage with the awareness of your original and eternal form. आत्मा का भी है और सत्यु के आदि का भी है। स्मृति से निर्बंधन बनने और बनाने वाले मर्जीवा भव। जैसे Just as the Father takes this body on loan, बंधन में has no bondage, similarly, शरीर में बाबा बंध नहीं जाता है, Baba is बंध not नहीं bound जाता by है, this तो बंध body गए, or फंस the गए ना body's things शरीर में। because we have taken this बाबा costume and we कैसे are देखो just बंध wrapped. हो जाते हैं। So just look at the role of लोन Baba, लेता how he है, plays. बंधन में नहीं आता है। Baba, जैसे just as the आप Father जीवा takes this जन्म body on a loan and has no वाले bondage, शरीर के संस्कार similarly, you children who have स्वभाव died के alive बंधनों से must मुक्त बनो। become free from any bondage of your जब bodies, चाहे sanskars or nature.
जैसे Imbibe whatever sanskars you want, whenever you want. Just as the Father is free from bondage, so you must also become free from bondage in the same way. बाप समान कैसे बनना, How can you become equal to the Father? It's not like becoming the Father, becoming like the Father. मूल वतन की Stabilize yourself in the stage of the incorporeal world and then you come down. अपने Remain aware of your original and eternal form. स्मृति में रहो, Perform actions as a soul who has incarnated, and others will then follow you. कर कर्म करो तो आपको भी फॉलो करेंगे, जैसे बाप को करते हैं। Just like how we follow Brahma Baba's actions, when we also become like him by following this method, others will obviously follow you. स्लोगन, Slogan: to make the atmosphere powerful with your attitude of remembrance is to do the service with your mind. वायुमंडल को पावरफुल बनाना, ये मनसा सेवा है। मनसा सेवा का आवा देखो कितना अच्छा अर्थ बताया। Baba just gives the wonderful meaning of the service through mind. We have to make the atmosphere powerful through एक इशारे remembrance, इस अव्यक्त की मास today's Avyakt signal, बंधन मुक्त in order to remain, just stay free from bondage and experience the stage of liberation in life. While you have any type of attachment, whether it's in the form of thoughts, relationships, connections, or your own specialities, any form of attachment will bind you in some bondage. के रूप में संकल्प So that bondage will not allow you to become bodiless or allow you to become a world benefactor. कोई भी लगाव बंधन युक्त कर देगा। Therefore, first of all, become free from all attachments, for only then will you be able to give the inheritance of liberation and liberation in life to the world. बना नहीं सकेगा, इसलिए पहले स्वयं लगाव मुक्त बनो, तब विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दिला सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज भोग के पहले कुछ अनाउंसमेंट हैं, वो पहले हम Announcements. सुन लेते हैं। इस सेवा टन में आए हुए सभी सेवाधारी भाई बहने, All the Sevadari brothers and जो भी sisters जोन से आए हुए भाई बहने हैं, and other आप सभी से brothers and हमारा sisters नम्र who have come निवेदन from है any zone, कि आज here is शाम a को humble डायमंड request हॉल to में all of you आप सभी की सौगात रहेगी। to collect your godly कोई भी gift ऊपर न today जाए। at Diamond अगर Hall कोई this ऊपर जाते हैं this तो भी evening. 6 बजे तक If नीचे someone आ has a जाए। plan for sightseeing आते or ही if someone पहले is अपनी going to visit सौगात Panda ग्रहण Bhavan, करें, other campus, उसके please बाद ensure ही that you reach the भोजन Diamond पर Hall जाए। in time and तो आप have your सभी इस gifts बात का collected. ध्यान रखेंगे। आज की दिनचर्या इस प्रकार रहेगी। Today's schedule is सुबह 10 से 10:30 10 to योग 10:30 रहेगा। a.m. there is yoga. 10:30 से 10:30 to 11:30 11:30 a.m. अहमदाबाद there is a की class कृति by बहन का Kriti क्लास sister, रहेगा। Ahmedabad. Topic is यथार्थ योग the और योग के accurate प्रयोग yoga and the इस विषय पर experiments वो मार्गदर्शन of देंगी। that yoga. 11:30 से 12:30 रामनाथ भाई जी का क्लास And रहेगा। 11:30 to 12:30 समय p.m. की there is a class पुकार, by Ramnath brother. योग और The तपस्या call of the का time महत्व। is to शाम को the call फिर of the time 5 lies से in 6 understanding बजे the तक importance of yoga डायमंड and हॉल में tapasya. ही योग रहेगा। Then post और that there 6 will be से yoga 7 evening आदरणीय भारती दीदी 5:30 जी का 5 to क्लास 6 रहेगा। there is yoga. 6 संस्कार to मिलन की रास 7 ये उनका टॉपिक there is रहेगा। a class फिर शाम को 7 on बजे the topic harmonizing the sanskars. अपना स्वागत And गीत 7 प्रस्तुत p.m. there करेंगी। is a song by उसके बाद Madhurvani आदरणीय team. मुन्नी दीदी जी Post सभा that में respected आएंगे Munni Didi ji और हम and सभी से all मिलेंगे। she will meet all एक of us. अनाउंसमेंट ये भी है कि जिन भाई बहनों ने आज भोग लगवाया All है the brothers and वे sisters who सभी have भोग given के your बाद names दादी जी मीटिंग हॉल में अपने for the भोग की bhog, you पर्ची will लेकर के पहुंच जाएं। reach Dadiji's संदेशी meeting hall बहन along with the हमारी slips आदरणीय which were रुक्मणी given, बहन आप सभी where से you will वहां पर मिलेंगी। where the हर trans गुरुवार messenger की sister तरह that is Rukmini विश्व Didi ji will meet all of you. शांति निमित्त योग As भक्ति usual on every शांतिवन Thursday, एवं बीके कॉलोनी के भाई बहनों all के the लिए sisters and brothers of दादी जी Shantivan as well मीटिंग as of हॉल BK में colony शाम को
August. 6 से It 8 is in बजे Dadiji's तक meeting रहेगी, hall from तो 6 to सभी 8 उसी p.m. अनुसार पहुंचेंगे। जो भी टीचर्स बहनें एवं अकाउंट लिखने वाली छोटी All the बहनें या teachers or the भाई younger sisters इस ग्रुप में आए or हैं, आप other सभी अपना चेकिंग others का who फॉर्म maintain the अकाउंट account ऑफिस records, you are सेकेंड requested फ्लोर to पर submit the जाकर के account form पहले on the ही second जमा floor करें। of the account office. जमा करने का समय है सुबह The 9 से time 12 is और 9 to शाम 12 को noon 4 से 6। and evening 4 to 6 p.m. आज सुबह 9 बजे ट्रेनिंग सेंटर हॉल नंबर 3 में ब्रह्मा This कुमारीज morning पाठशाला in चलाने room वाले number 3 of भाई training बहनों के center, लिए all the caretakers of पाठशाला Gita केयरटेकर Pathshalas ट्रेनिंग का चैप्टर नंबर 1 रखा गया है। अतः are सभी having a टीचर्स meeting. बहनें अपने पाठशाला So all संचालकों को the अवश्य इस teachers are ट्रेनिंग में requested to अपने send साथ all the लेकर के जाए। caretakers of the centers or Gita समय है सुबह Pathshalas. 9 बजे The timing और is स्थान है 9 ट्रेनिंग a.m. नंबर at हॉल नंबर hall 3। number 3 of training बरोड़ा center. मंगलवाड़ी सब जोन के सभी सेवाधारी भाई बहनें All एवं the टीचर्स brothers and अभी sisters सुबह from 9 बजे Baroda, Mangal, बड़े Wadi भंडारे में Center, कृष्णा भाई जी से you will जाकर meet के the मिले। Krishna brother in big ओम dining hall. म्यूजियम में सेवाधारी भाई बहनों The की Om आवश्यकता Museum है। has the requirement जो of भाई बहनें Sevadari brothers सेवा and करने के sisters. इच्छुक है Those who are वे ओम interested, म्यूजियम they के will just काउंटर पर visit the अपना counter नाम of नोट the करा museum सकते and हैं। you can just सुबह 8 register से your details. रात्रि 8 बजे तक The timing is गेट morning नंबर 1 8 के पास till ओम 8 म्यूजियम p.m. खुला रहता है, तो वहाँ आप जा सकते हैं। ओम शांति। और आज सतगुरुवार है। हमारी रुक्मणी दीदी Today is हम सभी Satgurwar. की याद लेकर के बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे, तो हम सभी योग में बैठेंगे। So she'll ओम carry शांति। all our wishes and remembrance and love and she will deliver it to Baba and then offer bhog to Baba and get us the message. Let's offer bhog to Baba.
दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते
याद सदा ही साथ तेरी रहे, याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। बाबा तेरे हम रहे, यही जिंदगी का सार है। बाबा तेरे हम रहे, यही जिंदगी का सार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है, इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। बाबा तेरे हम रहे। ओम शांति। जो साउंड डिपार्टमेंट में सेवा करना चाहते Those who would हैं, like साउंड to सिस्टम सीखना चाहते do हैं, service in एक दो sound महीना department, सेवा and में those who would like to रुकना learn चाहते हैं, वे and साउंड stay here for डिपार्टमेंट a के duration of 2 रविभाई जी से months, you can यहाँ just स्टेज contact के Ravi सामने brother, who is मिलकर just in front of the अपना नाम stage. दे You सकते can हैं। just register your details. फाजिम नगर की देवी माता, आप जहाँ कहीं भी हो, योग के बाद बाबा के रूम के पास आपकी बेटी उर्मिला से मिले। सभी बैठे रहेंगे, बाबा का संदेश सुन कर के जाए। जो भी माताएं भाई पीछे उठ रहे हैं, आप सभी से हमारा नम्र अनुरोध है, कृपया थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, बाबा का संदेश सुन कर के जाए। सभी प्लीज बैठ जाइए पीछे वाले। आज प्यारे बाबा के पास वतन में भोग लेकर, ढेर सारी यादें लेकर बाबा के करीब पहुंची। बाबा को जाने के साथ ही कहा कि बाबा विशेष गुजरात जोन के भाई बहनें आए हैं I told that Gujarat brothers and और sisters have याद come, भी दी है। and they have given their love and remembrance. तो बाबा एक सेकंड सुन करके मुस्कराने लगे। Baba just smiled बाबा for a ने moment. कहा कि गुजरात तो है ही, बाबा के घर का Gujarat is दूसरा स्थान, another place of Baba, और दूसरा ऐसा स्थान है there is one more place जो कोई बात एक कान से बोलते हैं where और someone says दूसरे something कान to से us from, कहते निकल जाती है। when we say something to others, और they just वहाँ listen with one another and they ये just बात let it नहीं, go बाबा ने कहा from another एक कान ear. से सुनी But Baba says और दूसरा कान तुरंत गुजरात में पहुंच जाता है। so Gujarat is so close that the moment we say तो बाबा something ने here, it reaches कहा कि Gujarat. इसलिए बाबा इस स्थान के भाई बहनों को बहुत ऊंची नज़र से, So Baba just sees बहुत ऊंची the brothers दृष्टि and से sisters of Gujarat so बाबा देखते हैं। in that बाबा ने कहा कि हर elevated स्थान की
with that elevated vision. हर जगह के बच्चों की भी बड़ी विशेषता होती है, Because the children from all other पर places विशेष also have this गुजरात speciality, but के the भाई children बहनों or की the बाबा brothers and sisters विशेषता of देख रहे Gujarat हैं are being seen, the कि specialities बच्चों of these में children are चाहे being कोई seen by अज्ञानी Baba. भी आत्मा होती है, Among children, चाहे ज्ञानी भी someone would बाबा be के ignorant बच्चे होते हैं, or some would be knowledgeable. फिर भी बहुत सरल चित्त के, निर्माण चित्त के और Despite सरलता having these की भाषा differences, बोलने some वाले बाबा के बच्चे होते हैं। so children who have that तो easy बाबा ने natured कहा कि and those who are इसलिए humble, only Baba's children गुजरात have such सात्विक qualities. होने के कारण इस स्थान के गुजरात के भाई बहनों के लिए कहा, So for Gujarat brothers and इस स्थान sisters, के भाई बहन है, सात्विक होने के कारण because of being बाबा ने sattvic, कहा कि इनका नेचर भी their nature also उसी प्रकार सरल is easy, चित्त भी बनता है। easy natured. बल बाबा ने कहा समय थोड़ा परिवर्तन हो रहा है, Of course, time is changing. क्योंकि थोड़ा तो संग का रंग एक दूसरे को लगता ही है, Definitely, we get पर affected by फिर the भी company बाबा that ने we keep. कहा कि जो नींव है, But जो still, the फाउंडेशन foundation, है विशेष गुजरात का, the तो बाबा ने कहा कि foundation बहुत ही of Gujarat प्योर, is बहुत ही very pure शक्तिशाली and very है, powerful. क्योंकि विशेष ब्रह्मा बाप की भी नज़र Because Brahma Baba's vision शुरू से गुजरात had में been पड़ी on Gujarat, और बाबा के छिपे हुए रत्नों को भी and बाबा all the ने hidden gems गुजरात were से निकाला chosen by Baba from और Gujarat. सेवा का विस्तार भी Of course, the expansion of बहुत service तेजी से also बढ़ा। went very बाबा ने quickly. फिर बड़े मुस्कुराते हुए कहा, बाबा को तो कभी And कभी Baba just, लगता है while smiling, he जब just बाबा said चक्कर sometimes लगाते while हैं Baba taking a tour around, तो यह भी देखते हैं कि he also sees that गुजरात का एरिया, the area of गुजरात के भाई Gujarat, बहन the है, brothers and sisters of Gujarat, जिस स्थान से, जिस एरिया से, जिस गांव से, जिस शहर से निकलते हैं, the place or the town तो or the उनके city from आसपास कोई where they just leave पाठशाला and ना come. हो, If they कोई don't even, सेंटर ना they हो, don't have a center or Gita ऐसा Pathshala बाबा there. को भी महसूस नहीं होता, क्योंकि हर जगह Baba also इन doesn't see बच्चों such में things सेवा का because इतना these children पावरफुल have बीज डाला हुआ sown है such a powerful और seed बीज डालते भी जाते हैं। and they are still sowing the तो seeds. बाबा ने कहा, इसलिए बाबा को भी विशेष That's why गुजरात के भाई बहनों को देख Baba, while बहुत looking at the नाज sisters होता and है, brothers of Gujarat, Baba has that pride बाप समान बनने वाले because you are the ones who जो will become बच्चे equal थे, to तो Baba. सरला दीदी को भी याद किया Baba बाबा just ने remembered आज Sarala Didi ji, कि बच्ची भी किस प्रकार शुरू how the से child from the initial हाजी का पाठ times पढ़ के she just चली was very firm on और this, पूरा yes ही my lord, जोन संभाला। and she had managed the तो entire मैंने zone. बाबा को कहा कि अभी कुछ दिन पहले बड़ा प्रोग्राम भी हुआ है बाबा, अभी And a mega तो event बाबा also ने happened कहा few कि days back. अच्छा है, Baba said it's fine. गुजरात के भाई बहनें जब बड़ा प्रोग्राम हुआ When था the तो Gujarat सबसे brothers and पहले sisters, गुजरात ने किया, the क्योंकि Gujarat's brothers and बाबा sisters का have यह arranged such a big स्थान magnificent event बाबा का राइट हैंड है। because that is तो the, बाबा ने कहा कि this is the ऐसे right ही hand of Baba. बच्चे जो सेवाएं करते हैं छोटे छोटे स्थानों पर, और फिर वो How छोटा children स्थान ही just बड़ा स्थान do the service in a बनकर very बेहद की tiny सेवा piece के of land and how that कार्य becomes के निमित्त instrumental बनता है। in तो बाबा इतना serving प्यार से सुना रहे थे, to स्नेह a के large साथ extent or in a सुना रहे very थे। big way. तो बाबा को आज कहा कि बाबा आज Today विशेष I said, Baba, चंद्रिका बहन मोरी वाली उनका Chandrika विशेष Didi's भोग bhog है, is there. और भाई साहब रमेश भाई साहब के Ramesh निमित्त भी brothers' भोग bhog है, is also there. और भी कई आत्माओं का भी भोग था। Few other souls' बाबा bhog ने were कहा also कि was also there. सतगुरुवार के दिन तो बाबा को
Baba said that इतना on the day ना of Satgurwar, प्यार से बाबा के बच्चे with so भोग much love, बनाकर Baba's children भोग make की थाली bhog तैयार and they करके just लाते हैं। get it ready and they बाबा भी bring to इतना be offered to Baba. अंदर में गदगद होते हैं, Baba खुश होते also हैं just has कि that बच्चों का कितना goose ना बाप pimples, से प्यार है। or he just wonders तो sometimes बाबा ने children कहा also जब have so बाप का much love प्यार for है तो the बच्चों का father. भी प्यार तो ऑटोमेटिकली When हो children जाता has है। such love for when तो Baba बाबा has ने कहा such यह love भी for the children, it's एक obvious that सूक्ष्म children में also in लगाव return होता have है, that much love for the father, स्नेह and this is प्यार the का। very subtle तो बाबा attachment of that love. ऐसे सुना रहे And थे तो उनको भी चंद्रिका बहन को भी बाबा ने इमर्ज किया, Baba emerged बड़े Chandrika's प्यार से sister भोग and fed स्वीकार Bhog. कराया। बाबा ने कहा कि Baba बच्ची said तो that child, बहुत ही सरलता की देवी रही she's a goddess और of सदा ही easiness, अंदर ही अंदर अंदर बाहर मुस्कराती रहती थी। and she was always दिल very साफ she had a clean होकर heart and she was बच्ची always ने cheerful. यज्ञ को भी बहुत कुछ किया है। She has अपने contributed a जीवन lot, में that soul has बहुत बड़ा contributed a पुण्य, lot बहुत बड़ा in the भाग्य sacrificial fire, बना which करके गई enabled है। that soul तो बाबा create ने such कहा a good ऐसी fortune, आत्माएं तो जहाँ भी गई है such a soul वहाँ भी wherever ऊंचा भाग्य he बनाने has की gone, निमित्त बनेगी। she will become instrument ऐसे कहते बाबा ने विशेष in creating that गुजरात के भाई very great बहनों fortune. को, विशेष निमित्त टीचर्स बहनों को भी And Baba बहुत just स्नेह gave the भरी love and दिल की remembrance याद प्यार दिया। to all the sisters and भारती brothers of दीदी की भी Gujarat. विशेष याद प्यार दी। बाबा ने कहा I कि just ये gave तो the lovely इनका नाम remembrance of भारती है, Bharti पर Didi ji. बाबा भी इन्हें Whereas भारत Baba, माता करके of course, her name पुकारते is थे, याद Bharti Didi करते ji. हैं। Her name is तो was बाबा ने भी Bharti, but Baba विशेष always सभी used to बहनों consider को her भी as बहुत the बहुत mother of Bharat. स्नेह भरी दिल की याद प्यार दी। So Baba also बाबा gave the का lovely याद प्यार remembrance, देके and while फिर taking नीचे those आ जाओ। remembrances, I just ओम reached the शांति। physical world. Om Shanti. कोई भी ऊंची चीज अभी आपको मिले, आप छोड़ेंगे हाथ से? क्यों ये इतनी ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई हमारे से छूट जाती है? सुनते सुनते क्यों हमारे में सुस्ती आ जाती है? क्यों हम ऊंचाई को जानते नहीं है? सुनते हैं तो हाँ हाँ करते हैं, परंतु अंदर में वो चिंतन रहे हमारा। ऊंचे ते ऊंचा बाप, कमाल तो बाप की है जो हम कैसे नीचे पड़े हुए हैं, और बाप आके हमें इतना ऊंचा बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं हमारे से। अगर ऐसे अंदर में सोचे तो बताओ बाप के लिए कितना दिल में प्यार आएगा। जो सहयोग देता है, जो सहयोग से हमें प्यार से इतना ऊंचा बनाने के लिए बार बार समझाते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, तो उस पर कितना प्यार आएगा।